স্বাগতম জনাইছো মই দীক্ষিত শৰ্মা। নিটৰ যি পৰীক্ষা আছে আমি সকলোৱে জানো নিট পৰীক্ষাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে 1 নৱেম্বৰত তাৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু এই যি পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষাত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হয়, বহু আশালৈ তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হয়, কিন্তু বহু কম সংখ্যক এনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে যি প্ৰথমবাৰৰ নিজৰ যি বা ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে তেওঁলোকে নিট ক্লিয়াৰ কৰি বা তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ স্থান দখল কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা খুব কমেই হয়। কিন্তু এটা নিটৰ যি পৰীক্ষা আছে বা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ কৰাৰ সপোন বিভিন্নজন বা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে, অভিভাৱকসকলৰ থাকে, তাৰ বাবে বিভিন্ন কোচিঙৰ প্ৰয়োজন হয়। আজিৰ তাৰিখত আৰু সেই কোচিং ক্লাছেছসমূহো থাকে। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে লল্লন কোচিং বা ইণ্টিগ্ৰেটেড যি কোৰ্চ আছে তাৰ যিজন প্ৰতিষ্ঠাপক আছে তেওঁ উপস্থিত আছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এজন ছাত্ৰ যোনে প্ৰথম এটেম্পটতে নিজৰ এই নিট পৰীক্ষা তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁ সৰ্বভাৰতীয়ত তেওঁ যিটো স্ক'ৰ পাইছে সেই স্ক'ৰটো হৈছে 578, 700 নম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁ পাইছে। সেই ছাত্ৰজন হ'ল কৃষ্ণাংশু গোস্বামী। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কৃষ্ণাংশু গোস্বামী। তাৰ লগতে এই সফলতাৰ যেতিয়া এজন সন্তানৰ সফলতা হয় বা সফল হয় তাৰ বাবে সেইখিনি সময়ত যিটো গৌৰৱ অনুভৱ কৰে পিতৃ মাতৃয়ে সেইটোক বুজাব নোৱাৰি বেলেগকৈ তেওঁলোকৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয়। সেই এজন গৰ্বিত পিতৃ বৰ্তমান মোৰ লগত আছে, সেইজন হ'ল কৃষ্ণাংশু গোস্বামীৰ পিতৃ আছে দীপক কুমাৰ গোস্বামী। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু কৃষ্ণাংশুৱে যিটো কোচিঙৰ পৰা গৈছিল বা যিটো কোচিং ইনষ্টিটিউটে তেওঁক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছিল সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটটো হৈছে লল্লন ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চেছ যিটো আছে তাৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে, লগতে তেওঁ ফাউণ্ডাৰ লল্লন কুমাৰ। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে সেই কোচিং ইনষ্টিটিউটৰে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই ফিজিক্সৰ ফেকাল্টি আছে, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই ৰঞ্জিত সাচনা, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰথমে কৃষ্ণাংশু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি, কাৰণ আপোনাৰ যিটো ছাকচেছ আছে এইটো খুব কম দেখা পোৱা যায় যি প্ৰথম এটেম্পটতে নিট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে, কি ক'বা? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, প্ৰথমবাৰতে মই এইখিনি মাৰ্কছ পাব পাৰিছোঁ। চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে একেবাৰতে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, ড্ৰপ দিব লগা অৱস্থা নহয় যাতে। তাৰ কাৰণে মই লল্লন ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি জইন কৰিছিলোঁ। মেইনলি এইটো কাৰণে যাতে টাইম বাচে। মই বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক দেখিছিলোঁ যে বেলেগকৈ স্কুলিং কৰে তাৰপিছত কোচিং কৰে, বহুত টাইম কনজিউম হয়, চেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে সময় নাপায়। কাৰণে ইয়াতে মই চেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে এনাফ সময় পাইছোঁ, 7 to 6 আৱাৰ্ছ পূৰা সময় পাইছোঁ। সেইটোৱে মোক বহুত হেল্প কৰিছে। কাৰণ তোমাৰ এইটো প্ৰথম এটেম্প আছিলে? প্ৰথম এটেম্প আছিল। হয়, তুমি মোৰ হাতত মই যিটো গম পাইছোঁ বা মোক যিটো জনোৱা হৈছে সেইটো মতে তোমাৰ 578 নম্বৰ পাইছা তুমি 700 ভিতৰত। হয়, আৰু তোমাৰ যথেষ্ট এটা অসমৰ ছাত্ৰ হিচাপে নিশ্চিতভাৱে এটা বৰ ভাল ফলাফল তোমাৰ আছে বা তুমি ফলাফল গ্ৰহণ কৰিছা। কেনেকুৱা লাগিছে ৰিজাল্টটো পাই? প্ৰথমেতো বহুত ভাল লাগিছে, শুনিয়ে ভাল লাগিছে যে এইখিনি পাইছোঁ। এটলিষ্ট আশা কৰি আছিলানে বাৰু পৰীক্ষা দি তুমি এনেকুৱা মানে? যিমান মই এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ সিমানে পাইছোঁ আৰু সিমানো ওচৰ পাজৰে পাইছোঁ আৰু 1-2 নম্বৰ ওচৰ পাজৰে হৈছে। এইটো এইম কৰিছিলোঁ, এইমটো বহুত হাই আছিল বাৰু, এইখিনি পাইছোঁ এতিয়া মোৰ ঠিকেই লাগিছে, ছেটিছফাই আৰু। কাৰণ তোমাৰ এনেকুৱা হৈছিল নেকি যে যিহেতু ক'ভিড চিটুৱেশ্যন মাজত আছিলে, সেইধৰণে যি আগৰ ধৰণে শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ আছিল বন্ধ আছিল, সেইধৰণে কোচিং ধৰা ইজনে সিজনৰ লগত বহি বা কথা পাতিবও তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাছিল। তেনেকুৱা মুহূৰ্তত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ লল্লন কোচিঙৰ পৰা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি মানে সহায় পালা বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াই লৈ গ'ল? প্ৰথমতে যেতিয়া ক'ভিড আৰম্ভ হৈছিল চব বন্ধ হৈ গৈছিল, কমপ্লিট লকডাউন হৈ গৈছিলে। আমাৰ ক্লাছ চব বন্ধ হৈ গৈছিলে। আমি সেইকাৰণে ভাবি আছিলোঁ এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এক্সামটো আহি আছে। সেইকাৰণে তেতিয়া লল্লন ছাৰৰ টীমে অনলাইন ক্লাছ অৰ্গেনাইজ কৰিলে, যোনটো বহুত হেল্পফুল হৈছে। কাৰণ অনলাইন ক্লাছৰ বিনা আমি এইখিনি আহিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন। অনলাইন ক্লাছত আমি ঘৰত বহিয়ে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিছোঁ, ছাফিচিয়েণ্ট টাইম নিজৰ মতে আৰামছে চব কৰি পেলাই ঘৰতে পাৰিছোঁ আৰু এই ক'ভিডৰ পৰা দূৰত থাকি ঘৰত ক্লাছ কৰিব পাৰিছোঁ। সেইটোৱে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে, বহু সহায় কৰিছিল তেওঁলোকে। হয়, মই এতিয়া যাব বিচাৰিছোঁ যিজন লল্লন কুমাৰজী, আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আহিব বিচাৰিছোঁ। যিটো সফলতা আছে ইতিমধ্যে কৈছে কৃষ্ণাংশুৱে কেনেধৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল, কি টিপছ দিব বিচাৰিব যে JEE আৰু নিটৰ যি পৰীক্ষা আছে আৰু বিশেষকৈ কেমেষ্ট্ৰি ক্ষেত্ৰত আপুনি কি টিপছ দিব বিচাৰিব? मेरा टिप्स यही है कि आप यदि JEE या नीट किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो हाईली डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और आपके टीचर चाहे आप जिनसे भी पढ़ते हैं उनकी बातों पे
थ्रू आउट विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप कोर्स के स्टार्टिंग में आप उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं और फिर आप डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं। आपको थ्रू आउट जब भी आप प्रिपरेशन टाइम आपका है उसमें आपको पूरा टाइम मतलब मोटिवेटेड रह के उनके टीचर पे, अपने टीचर पे, अपने स्टडी मटेरियल पे, अपने टेस्ट सीरीज पे आपको विश्वास करना होगा। क्योंकि आज जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बने, बट बहुत लोगों का ये सपना ही रह जाता है। इसका रीजन है कि डिस्ट्रैक्शन और एक जो बेसिक क्वालिटी है जो हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए, कंटिन्यूटी का। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास करते हैं स्टार्टिंग में और फिर क्लास करना बंद कर देते हैं किसी न किसी रीजन से। और बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, किसी न किसी रीजन से टेस्ट मिस कर देते हैं कि मेरा मार्क्स कम आएगा, मेरा सच्चाई लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरा हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, पूरे विश्वास के साथ पढ़िए, पूरे विश्वास के साथ हर टेस्ट में अपीयर कीजिए। रहा बात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का जो JEE और नीट के लिए रिक्वायर्ड है, हर चीज़ आपको पहले रिपेल करेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पहले रिपल्सन आएगा, मतलब वो आपको अपने से दूर भगाएगा। उस समय आपको हार नहीं मानना है, इसलिए आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। মই মাত্ৰ এতিয়া যাব বিচাৰিছোঁ দীপক কুমাৰ গোস্বামী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ পুত্ৰই এটা বৰ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, এজন পিতৃ হিচাপে আপুনি নিশ্চিতভাৱে গৰ্বিত হ'ব। কি ক'ব প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব বিচাৰিব? মই প্ৰথমতে এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ, সি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত সি নিজেই তাৰ ডিটাৰমিনেশ্যন এটা আছিলে যে মই মেডিকেলেই পঢ়িম, মই ইঞ্জিনিয়াৰিং নপঢ়োঁ। ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোনো এটেম্পটেই দিয়া নাই সি। তাৰপিছত যেতিয়া এডমিশ্যন ক্লাছ 10ৰ পিছত যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব লাগে তেতিয়া মই অলপ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলোঁ যাতে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীত ল'লে ভাল। তাৰ সি নিজেও কৈছে এতিয়া তাৰ যিটো গতানুগতিক স্কুলত গ'লে তাৰ স্কুলৰ পৰা আহিব, আকৌ কোচিঙত যাব, টিউশ্যনত যাব, গ'লে তাৰ সময়টো মেকআপ কৰাত বা বহুতখিনি সময় ঘৰত পঢ়িবৰ সময় নাপায়। প্লাছ ইয়াতে যিটো ইণ্টিগ্ৰেটৰ দেখিছোঁ আমি চাইমালটেনিয়াছলি তেওঁলোকে কোচিঙো শিকাইছে, যিটো আমাৰ নীটৰ কোচিংটোতো শিকাইছে, তাৰ লগতে বৰ্ডৰ মানে ক্লাছবিলাকো একেলগে কৰিছে। আজি এইটো সময়ত যদি এঘণ্টা এইটো ক্লাছ হয়, নেক্সট আৱাৰটো এইটো বৰ্ডৰ ক্লাছ হয়। তাত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো মানে বৰ্ড আৰু কোচিং লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মানে বেলেগকৈ তেওঁলোকে সময় তেওঁলোকৰ মানে নষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাই। তাৰোপৰি যিটো সময় তেওঁলোকে দিছে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ সময় ৰাতিপুৱা ধৰক 9টাৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হৈ 2:33 শেষ হৈ ঘৰত 1-1.5 ঘণ্টা ৰেষ্ট লৈ পেলাই তেওঁলোকে আকৌ পঢ়িব পাৰে। তাতে মই চবতকৈ এটা ভাল দেখিলোঁ লালঞ্চ একাডেমীৰ এইটো বস্তুৱেই, গোটেইখিনি টিচাৰে তেওঁলোকে সাধাৰণতে এইবিলাকৰ প্ৰাইভেট কোচিংবিলাকৰ টিচাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে, টাৰ্ণঅভাৰ হয় বেছিকৈ। সেইটো হ'লে ষ্টুডেণ্ট এফেক্টেড হয়। এতিয়া মই মোৰ ল'ৰাৰ সময়তে দেখিছোঁ এইটো ভেৰি নেগলিজিবল, বহুত কম সংখ্যকহে এনেকুৱা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেকজন টিচাৰকে তেওঁলোকে কেমেষ্ট্ৰিৰ লালন কুমাৰ ছাৰ আছে, বায়'লজিৰ আছে, ফিজিক্স আছে। মই সোধোঁ কেতিয়াবা যে মানে কোনোবা ছাবজেক্টৰ তুমি মানে বেয়া পাইছা নেকি, টান পাইছা নেকি, গোটেইকেইটা কেইজন টিচাৰকে সি মানে হাইলি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ শিকায়। নুবুজিলে আকৌ নিজে যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে ফিডবেকবিলাক মানে দিবলৈ পালে ভাল পায়। আটাইতকৈ মই সুবিধা এইটো ভাল পাইছোঁ যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ যেতিয়া ক'ভিড চিটুৱেশ্যন আহিল, ৰেগুলাৰ ক্লাছ বন্ধ হৈ গ'ল, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা ইয়াত দি পেলাই ভুল কৰিলোঁ নেকি, কাৰণ ইফালেও নহ'ল সিফালেও কোচিঙো নহ'ল। তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে উইদিন এ ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড, উইদিন 15-20 ডেজ তেতিয়া লালঞ্চ একাডেমীয়ে যিটো অনলাইন কোচিং আৰম্ভ কৰিলে, মষ্ট ইফিচিয়েণ্ট কোচিং, সেইটো মষ্ট প্ৰডাক্টিভ হৈছে মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে। আৰু ল'ৰাই শেষত এনেকুৱা হৈছে যে সি এই যিটো অনলাইন কোচিংটো কৰিছে, কৰাৰ পিছত মানে অফলাইনৰ কথা যেতিয়া আহিছে, পিছত ক'ভিড চিটুৱেশ্যন অকণমান ভাললৈ আহিছে, তেতিয়া সি নিজেই মানে কৈছে যে মোৰ অফলাইনটোতকৈ মই অনলাইনটোৱে ভাল পাইছোঁ, এতিয়া মই ইয়াত কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰোঁ। গতিকে মোৰ মানে ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিম, শেষত আকৌ এবাৰ আহিম। আমাৰ লগত আছে ফিজিক্সৰ ফেকাল্টি আছে ৰঞ্জিত সেনা। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ফিজিক্স ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি বা ইতিমধ্যে যিখিনি বিষয় আছে সেই বিষয়খিনিয়ে খুব প্ৰয়োজনীয় হয় এই JEE বা নীটৰ যি পৰীক্ষাৰ বাবে।
কেনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ দিব পাৰি? কাৰণ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিছুমান কথা মনত ৰখাত তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি টিপছ দিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে তেওঁলোকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিব পাৰে বা এনেধৰণে সহজভাৱে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো চাব পাৰে? देखिए, जहाँ तक फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स में जनरली जहाँ तक लोगों को लगता है जब वो नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो बोलते हैं फिजिक्स टफ है। जनरली एक नॉर्मल क्राइटेरिया माइंड मेकअप कर लिया है कि फिजिक्स टफ है। शुरू में कुछ समय तक नहीं होती तो लगता है कि अब उनसे नहीं हो पाएगी। तो जहाँ तक हम लोगों को इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं, फिजिक्स में एक सिंगल सा टिप्स है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। जैसे इस बच्चे की बात करें, फिजिक्स करता था, फिजिक्स में इसको शुरू में प्रॉब्लम हुई, बच्चे ने कहा सर हमसे नहीं होता है। तो आप फिजिक्स में सबसे पहली चीज तो आप टीचर पर अपने विश्वास करिए जो भी आपको पढ़ा रहा है। आपको अगर फिजिक्स में मान लीजिए आपने आज 10 न्यूमेरिकल किए, 10 में से आपके आज पहला दिन हुआ, एक भी नहीं हुए, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल में चल क्या रहा है उसकी साइकोलॉजी समझनी है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना फिजिक्स का और सब्जेक्ट से अलग क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले, क्वेश्चन जब समझेंगे आप उसको तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा, एनसीईआरटी पे आपको बहुत ध्यान देना है ज्यादा। जहां तक लोगों को क्या होता है आजकल हर चीज का सोल्यूशन लोग ढूंढने लगते हैं, तो क्या करते हैं टेक्स्ट बुक से दूर चले जाते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए पिछले 10 सालों का, आपको टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम मिलेगा। इस साल भी क्वेश्चन वही था। तीसरी चीज, आपको फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़नी, समझनी बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में जो आपको मेन चीज है, नीट लेवल पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स में छोटा छोटा क्वेश्चंस करना है, बजाय बड़े बड़े की आप उसको छोटा छोटा करना है। आप अपना फिजिक्स में पहले दिन से ही कोशिश करिए, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आप कितना टाइम लगा रहे हैं और उस टाइम की रिपोर्ट अपने कंसर्न फैकल्टी को दीजिए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आप देख लीजिए, ज्यादा बच्चा नहीं होता है, हम लोग इनटेक ही बच्चा कम लेते हैं। उसमें अगर आप देखिए तो हम लोगों का बच्चा आई टू आई कांटेक्ट हर बच्चे से रहता है। अगर हमने 10 क्वेश्चन आज दिया है उसको क्लास में, तो कल हम लोग रिपोर्ट लेते हैं, बेटा 10 क्वेश्चन किया, वो अगर बोलेगा किया हमने, तो हम उससे पहला क्वेश्चन हमारा रहता है कितना टाइम लगाया आपने। तो हम उसको टाइम डे बाई डे बोलते हैं, इसका चार्ट बनाइए, टाइम इसको रिड्यूस करिए, कैसे रिड्यूस होगा इसका टिप्स देते हैं। तो फिजिक्स के लिए देखिए, वैसे तो आप 3 आवर्स के पेपर में देखिए 1 आवर्स डिवाइड किया गया है, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। लेकिन अगर आप फिजिक्स का नॉर्मली पेपर करना चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट्स में कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर रीजन असर्टन वाला क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, 50% से 40% इतना पेपर होता है। उस क्वेश्चन में आप टाइम बचाकर दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसलिए फिजिक्स की वजह से आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा पेपर छूट गया है, ये ध्यान रखिए। फिजिक्स बहुत आसान है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप फिजिक्स में टारगेट करिए 45 में से 45 क्वेश्चन आपको सही करने हैं सारे। आप एक टारगेट फिक्स करिए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है फिजिक्स में, हम अगर मैक्सिमम फुल स्ट्रेंथ कर सकते तो हमारे कितने नंबर आ सकते, वो आप टीचर से डिस्कस करिए। देखिए फिजिक्स में बच्चे से ज्यादा टीचर का रोल है। अगर आपको टीचर अच्छे से, अगर आपको फिजिक्स नहीं आ पा रही है, इसका मतलब आप गाइडेंस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। आप इस गाइडेंस के लिए आप टीचर से, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको आप अपनी कमी जरूर बताइए। अच्छाई की जरूरत नहीं है, कमी बताइए कि सर हमने आज 10 क्वेश्चन किए थे, 10 में से हमारे 2 बने, 4 बने, 3 सॉल्व हुए। तो ये मेन फिजिक्स में आपका टिप्स है कि आप टाइम बाउंडेड हर चीज करिए। अच्छा, हाँ, मैं तुम्हार ओसरले आहिছোঁ, কৃষ্ণাংশু গোস্বামী, তোমাৰ কি টিপছ দিবা? তুমি যেটো তোমাৰ কেনেধৰণে তুমি পৰীক্ষাত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলা আৰু তেখেতে তোমাৰ যিসকল পৰৱৰ্তী যিসকল আহিব তেওঁলোকক কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি তুমি? মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে ছাকচেছ পাবলৈ হাৰ্ডৱৰ্ক লাগিব, কনচিষ্টেঞ্চি লাগিব আৰু নিজৰ গ'লটো একদম ফিক্স থাকিব লাগিব। যিমান বাৰে ফেইল নহওক আকৌ উঠিব লাগে, আকৌ যাব লাগে, যেতিয়ালৈকে এচিভ নকৰোঁ গ'লটো গৈ থাকিব লাগে, নিজৰ बेस्ट দিব লাগে सबते, নিজৰ बेस्ट দিব লাগে। হয়, मैं ललन कुमार जी आपके पास आता हूं मैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो होता रहता है, ये सब आपका जो कोर्स है, कोर्स तो होता रहेगा, इस तरीके से आते रहेंगे, मगर मेन क्या बात है, मेन क्या बात पे फोकस करना चाहिए? आपका जो कोर्स है, कोर्स तो फिनिश होगा, उसको लेकर एग्ज़ाम दिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा, मगर इन सबसे ऊपर मेन फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए?
देखिए मेरे अकॉर्डिंग मेन फोकस पॉइंट हर स्टूडेंट्स का ये होना चाहिए कि उनको मतलब एक अंदर से उनको ये पता होना चाहिए उनका कि उनको इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि हम बहुत स्टूडेंट को तैयारी करते देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट बस इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि बगल वाला भी तैयारी कर रहा है, उनके पास ना कोई एम है ना कोई गोल है कि हमको अच्छा डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है। तो सबसे पहले तो हर स्टूडेंट को अपना गोल के प्रति जो है उस बहुत ज़्यादा उनको फोकस्ड रहना चाहिए। उसके बाद गोल डिसाइड करने के बाद उसके बाद उनको एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए और उसके लिए उस स्टूडेंट को 24 आवर्स मोटिवेटेड रहना चाहिए। जैसे हम एक टेस्टिंग के लिए बोल देते हैं, हर स्टूडेंट जो भी अभी तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट जब सुबह उठता है तो सबसे पहले उसको किस चीज का याद आता है, रात में सोते समय क्या वो प्लानिंग करके सोता है, बस ये चेक कर ले उसका डेडिकेशन पता चल जाएगा। यदि स्टूडेंट सुबह उठते ही उसको ये मालूम रहता है कि हमको क्या आज पढ़ना है तो वो स्टूडेंट परफेक्टली तैयारी करता है। यदि स्टूडेंट में ये डेडिकेशन आ गया कि हमको जो हम आज डिसाइड किए हैं उसको पूरा फुलफिल करना है, आज ही पूरा फुलफिल करना है, कल के लिए उसको नहीं छोड़ना है, तो ऐसे स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे एग्जामिनेशन कितना भी टफ हो सकता है वो स्टूडेंट स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल फेस करे, थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको कोई पीछा नहीं कर सकता है। हर स्टूडेंट क्वालिफाई करता है। तो ये जो भी डेडिकेशन आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है, हर स्टूडेंट के पास एक इंटेलिजेंट कोसेंट होता है, लेकिन इंटेलिजेंट कोसेंट के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल कोसेंट। जैसे हमको डॉक्टर बनना है तो क्यों डॉक्टर बनना है, हमको डॉक्टर बन के क्या मिलेगा, हमको इंजीनियर बनना है, आईटी करना है तो आईटी ही क्यों करना है, हम नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से क्यों नहीं इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है, आईटी करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये जो इमोशनली पॉइंट्स है वो हर स्टूडेंट को बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मेरा आईआईटी में 1 to 100 रैंक लाना है, मेरे को 1 to 1000 रैंक लाना है, नीट का एग्जाम में हमको 1 to 1000 रैंक लाना है। तो ये पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देना चाहिए। चाहे आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हो तो हमेशा एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे आप कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं तो एक कंपटीशन होना चाहिए कि मेरा टेस्ट में इस टेस्ट में टॉप 10 में आएगा, दूसरे से कंपटीशन रखना है। जो कि हम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं और रिलैक्स रहते हैं, टेस्ट मन किया तो दे दिए, नहीं मन किया नहीं दिए, उनको अपना रैंकिंग से, टेस्ट के रैंकिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब चीज नहीं रखेंगे, ये सब चीज को कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तैयारी करने का, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट कंपटीटर, यू आर ऑलरेडी आइसोलेटेड, आप कंपटीटर नहीं हो। कंपटीटर वो होता है जो हर समय मोटिवेटेड होके एक सिंगल चीज भी मिस नहीं करता है। सिंगल चीज मिस करने का मतलब आपका जो इवैल्यूएशन टेस्ट हो रहा है, आपका जो रेगुलर क्लास हो रहा है, वो आप पूरा अच्छे से अटेंड कर रहे हो। तो ये सब सारा बेसिक पॉइंट है जिसके थ्रू स्टूडेंट कहीं भी बैठ के तैयारी करे वो क्वालिफाई करेगा ही। दीपक कुमार गोस्वामी, मैं আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি কি সাজেশন দিব বিচাৰিব যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে বা তেওঁলোকক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি বা তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছক? হয়, মোৰ লাষ্ট 2 বছৰ মোৰ ল'ৰাই যিটো লায়ন্স একাডেমিত পঢ়িলে তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই মই কৈছোঁ যে একাডেমিটো ওৱান অফ দি বেষ্ট অপশ্যন মই ভাবোঁ। তাত পঢ়িলে মই যিটো ক'লোঁ অকণমান আগতে যে ল'ৰাৰ বা ছোৱালীৰ যিটো নৰ্মেল স্কুলত যাব, স্কুলত যোৱা সময়খিনি তাৰপিছত আকৌ কোচিঙত আহিব, সেইটো দুটা কাৰণে সময় বহুত কনজিউম হয়। একেলগে যদি ইণ্টিগ্ৰেটেড হয় এইটো বহুত সুবিধা হয়। মই লালন্স একাডেমিৰ এটা বস্তু মই পালোঁ, মোৰ ল'ৰাৰ ক্লাছ 10লৈকে সিমান খুব বেছি চিৰিয়াছ নাছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া লালন্স একাডেমিত এডমিশ্যন লয় তাৰপিছৰ পৰা চেঞ্জেছটো, মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা পুনেত থাকে, সি আহি পেলাই ইয়াৰ পঢ়াটো লাষ্ট 2 মাহত সি আছে এই ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যনত। সি কৈছে ইয়াৰ এই চেঞ্জটো কেনেকৈ হ'ল এইটো। তেতিয়া মই কৈছোঁ এইটো যাদু লালন্স একাডেমিত এডমিশ্যন লোৱাৰ পৰা তাৰ এই মটিভেশ্যনটো আহিছে যে মানে ফ'কাছটো তাৰ এইটো হৈছে যে মই ইয়াত পঢ়িব লাগিব আৰু মই তাৰ যিটো পঢ়াৰ যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট যে মই কম্পিটিটিভ ইয়াত দি মই পাব লাগিব,
সেই মটিভেশ্যনটো লায়ন্স একাডেমীয়ে দিছে সেইটো কাৰণে মই লায়ন্স একাডেমীৰ পিছত বহুত কৃতজ্ঞ আৰু এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ সি যেতিয়া পঢ়িছে প্ৰথম এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়তে তাৰ মই ডিটাৰমিনেশ্যন এটা মই ভাল পাইছোঁ এডমিশ্যন যেতিয়া লয় তেতিয়া মই কৈছোঁ সি মেথছটো ল'ব খোজা নাই কৈছে মই ইঞ্জিনিয়াৰিং নপঢ়োঁ বা বেলেগ নাই মই বায়'লজি মই ভাল পাওঁ মই মেডিকেল পঢ়িবৰ মন মেডিকেল পঢ়িম মই গতিকে মই ইয়াতে ফ'কাছ কৰিম তাৰপিছত মই তাক কৈছিলোঁ যদি নোপোৱা মেডিকেল নাপালে তুমি এটলিষ্ট মেথছ ল'লে তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণেও স্ক'প এটা থাকে তেতিয়া সি কৈছে মই পাম সেইটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে সি পাম মোৰ ঘৰত গেষ্ট আহিছিল গেষ্টৰ আগতো কৈছে মই পাম সেই যিটো তাৰ ডিটাৰমিনেশ্যন আছিল শেষলৈকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিয়ে এক্সাম দিয়াৰ পিছতো যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ তুমি বাই চান্স নাপালে কিছুমান ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত সাধাৰণতে 5% ষ্টুডেণ্টো নাপায় বুলি মই শুনিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটৰ যিবিলাকে দিয়ে 5% ষ্টুডেণ্টো নাপায় কাৰণ বৰ্ড আৰু এইটো যিহেতু দুয়োটাই পঢ়িব লাগে সেইটো কাৰণে ইয়াত এই নীটৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিমান সময় দিব নাপায় গতিকে এইটোতে মোৰ ভাল লাগিছে যে প্ৰথম এটেম্পটতে সি এইটো পাইছে আৰু এটা বস্তু মই ক'ব খুজিছোঁ লায়ন্স একাডেমীয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কোচিং হয় তাৰ মাজতে এদিন মানে গাৰ্জেনছৰো মিটিং এখন হৈছিল তাতে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি 9 জেম চিলেক্ট কৰিম 9 জেম মানে 9জন ষ্টুডেণ্টক চিলেক্ট কৰিব কাৰণ তেওঁলোকক ভাল মানে অলপ মানে আপাৰ লেভেলৰ কোচিং দিব যাতে তেওঁলোকে অল ইণ্ডিয়া লেভেল যেনে এইমছ টেইমছত কম্পিট কৰিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে এইমছত বা অল ইণ্ডিয়াত যিকেইখন ভাল ইনষ্টিটিউট জিপমাৰ আছে এইটো আৰু দুখনমান আছে সেইকেইখনত মানে ফাৰ্ষ্ট 10ৰ ভিতৰত যিকেইখন আছে সেইখনত পাবলৈ অলপ হাই লেভেলৰ কোচিং লাগে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে 9 জেম পাতিছিল পাততে তেতিয়া 9জনৰ ভিতৰত মই ভাবিলোঁ মোৰ ল'ৰা পঢ়িলেও ভাল আছিলে কিন্তু মোৰ ল'ৰা তাত টপ পৰিছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি সেই 9 জেমৰ সেই ক্লাছ বা ছেপাৰেটলি ক্লাছ নহ'ল এই ক'ভিডৰ কাৰণে বহুতখিনি অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তেওঁলোকে অনলাইন কোচিঙৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে গতিকে জেনেৰেলাইজ কোচিংটো হ'ল তথাপিও মই সুখী হৈছোঁ যে প্ৰথম এটেম্পটত মোৰ ল'ৰা এইখিনি পাইছে ভালেই কৰিছে আৰু লায়ন্স একাডেমীত সেইটো মই এতিয়াও ৰঞ্জিতজী আপুনি এটা বা দুটা শব্দত শেষ মন্তব্য কি দিব বিচাৰিব क्या आप टिप्स देना चाहेंगे 1-2 वर्ड में देखिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत चाहिए नीट के एग्ज़ाम हो या जेई मेंस के लिए हर चीज़ के लिए आपको बार बार टोकना कोई दूसरा नहीं टोके आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए कि आप डेली अगर इतना काम करेंगे तो फिर करना है उसमें कोई एक्सक्यूज़ ना चले दिस इज़ द मेन टेक्निक एंड टिप्स ঠিক আছে কৃষ্ণাক্ষু গোস্বামী তোমাৰ ওচৰলৈ মই আহিছোঁ আৰু শেষত তুমি কি ক'বা যিসকলে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক কি ক'বা মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে লাষ্ট সময়লৈকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে নিজৰ বিশ্বাসটোৱে মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু টিচাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে টিচাৰ যোনটো কয় সেইটো ভালকৈ শুনিব লাগে আৰু নিজে পূৰা চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিব পাৰে আৰু যিমানবাৰ ভুল হওক বা শুদ্ধ হওক ট্ৰাই কৰিব লাগে যে ভুলখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সটবাৰ সেইটো ভুল আকৌ নহয় যাতে যিমানবাৰ ভুল হয় আকৌ উঠিব পাৰে মানে আত্মবিশ্বাসটো হেৰুৱাব নালাগে য়েছ হয় ললন কুমাৰজী মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শেষ এটা বা দুটা শব্দত একদম গুৰু মন্ত্ৰ কি ক'ব गुरु मंत्र यही है कि कितना भी डिफ़िकल्टीज आ जाए कितना भी प्रॉब्लम आ जाए आपको किसी भी स्टूडेंट को अपना गोल चेंज नहीं करना है और कितना भी टफ प्रॉब्लम आए इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स या कुछ भी अपना विश्वास मेंटेन करना है और हम लोग का यही चीज़ है कि हम लोग 2018 में इंटीग्रेटेड एकेडमी एस्टेब्लिश किए थे ललन्स इंटीग्रेटेड एकेडमी एंड we are very proud of Krishnangshu Goswami that he got a very good rank in NEET 2021 बहुत प्रॉब्लम्स था कोविड का कारण ऑनलाइन क्लासेस चला बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से ट्राई किए कि ऑनलाइन क्लास भी अच्छे से कंडक्ट करवाए बट वी आर एक्सपर्ट इन ऑफलाइन क्लासेस फिर भी कृष्णांशु ने प्रूफ कर दिया कि मतलब यदि टीचर पे विश्वास किया जाए जैसा कि हम लोग शुरू से सिखाए थे तो स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं पूरे ललन्स इंटीग्रेटेड टीम के पूरा फैकल्टी टीम पूरा स्टाफ टीम पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग को और भी सक्सेस आएगा और भी स्टूडेंट ऐसे बहुत क्वालिफाई करेंगे जिससे आसाम का पूरा इंडिया में नाम हो ধন্যবাদ জনাইছোঁ ললন কুমাৰ ৰঞ্জিত সাচনা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃষ্ণাংশু গোস্বামী তোমাক অভিনন্দনো জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু আপোনাকো অভিনন্দন জনাইছোঁ দীপক কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাকো অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণৰ যদি বিশ্বাস শিক্ষকৰ ওপৰত ৰখা যায় তেতিয়াহ'লে সকলো কামতে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি ললন কোচিঙৰ ফালৰ পৰা এষাৰ কথা কৈ থকা ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে টাইম এইটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ